Okay, students, the modified Euler's problem we can go to using this formula. What is the formula? dy by dx is equal to f of x comma y. This is a given function and the problematic, and y of x naught is equal to y naught. It's the initial value. Okay, we need to find y at x1 is equal to x naught plus h. x1 x1 find करने का रहता है यहाँ पे. And next we first obtain y of x1 is equal to y1 by applying Euler's formula, and this value is regarded as the approximation for y1, usually denoted by, how to denote here? We can go to the stepwise here. And what we can do here, next one, y of 0, y1 of 0 is called the predicted value of y1. y1 का predicted value क्या रहता है यहाँ पे? y1 of 0. Okay, and next, सर तो स्लाइड मारोगे तो क्या होगा? Zoom करी मारबेका. Okay, here the heading is a modified Euler's method. The first we can go to the Euler's formula. The formula, Euler's formula क्या है यहाँ पे? y1 of 0 is equal to y0 plus h into f of x naught comma y0. This value of y1 is successively improved, corrected, okay, to the desired level of accuracy by applying modified Euler's formula. First modified Euler's formula करते हैं. First कौन सा वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे? Euler's formula यूज करके ही modified Euler's formula फाइंड करना है यहाँ पे. क्या दिया यहाँ पे नीचे? The successive approximation given by first finding y1 of 0, it's a Euler's formula, and further we can move to the successive approximation. Okay, here in the previous one, y1 of 0, it's a first form, and second we can go to the this formula, y1 of 1 is equal to y0 plus h by 2 f of x naught y0 plus f of x1 comma y1 of 0. Previous value आए ना यहाँ पे, previous value यहाँ पे add करते जाना. Okay, the next one, y1 of 2 is equal to y0 plus h by 2 f of x0 comma y0 plus f of x1 comma y1 of 1, previous one. Okay, previous one value here. Third one, y1 of 3 is equal to, यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे? As it is same previous one value, y1 of 2. You can remember to solve the modified Euler's formula. First, what do you remember here? First, nothing here. First, what do you remember? x1 is equal to x0 plus h. This formula. If किसका वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है? x1 फाइंड करने का. नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे? y1 of 0 is equal to y0 plus h f of x0 y0. एक किसका फॉर्मूला? यूलर्स फॉर्मूला. ये फॉर्मूला होने के बाद यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आता है यहाँ पे 1 2 3 depend on the problem. Okay, here y1 of 1, y1 of 2, y1 of 3. Okay, and we can go to the next one. Wait, continuation. Okay, each successive approximation is better than previous ones and are also called corrected values. Euler's formula and modified Euler's formula jointly are also called as Euler's predictor and corrector formula. यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करके कर रहे हैं? यहाँ पे यूलर्स मेथड भी यूज कर रहे हैं और उसके बाद मॉडिफाइड यूलर्स भी यूज कर रहे हैं. यहाँ पे दोनों मिला के क्या बोलते हैं? दोनों यूलर्स फॉर्मूला, मॉडिफाइड यूलर्स फॉर्मूला jointly are also called as Euler's predictor and corrector formula. Okay, this is a modified Euler's method. यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको कैसे फाइंड करना समझ में आता है. यहाँ पे क्या करना? फर्स्ट क्वेश्चन इज, सी द क्वेश्चन, यूज modified Euler's method to compute y of 0.1 given that dy by dx is equal to x square plus y comma y of 0 is equal to 1 by taking h is equal to 0.05, considering the accuracy up to 2 approximation in each step. उन्होंने मेंशन करा यहाँ पे
कितने अप्रोक्सीमेशन करना, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ईच स्टेप दो दो करते जाना. ओके, कम टू द सॉल्यूशन. वी नीड टू कंप्यूट. यहाँ पे क्या करने का है, कंप्यूट. क्वेश्चन में देखो मॉडिफाई यूलर्स में dy बाई dx के वैल्यू क्या दिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई. और नेक्स्ट में आता बाय डाटा. यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट वी नीड टू कंप्यूट y ऑफ 0.05 फर्स्ट एंड यूज दिस वैल्यू टू कंप्यूट y ऑफ 0.1. क्वेश्चन में दिया यूज मॉडिफाई यूलर्स मेथड टू कंप्यूट y ऑफ 0.1. ये वैल्यू फाइंड करना. ये वैल्यू फाइंड करते फर्स्ट कौन सा वैल्यू फाइंड करना, h इज इक्वल टू 0.05 का. कैसे करें उन्होंने, देखो यहाँ पे स्टेजेस आता, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज. ओके, वी कैन गो टू द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या लिखना, फर्स्ट स्टेज, वेट, फर्स्ट स्टेज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज, बाय डाटा, इनिशियल वैल्यू, व्हाट इज इनिशियल वैल्यू हियर, फर्स्ट वन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू y नॉट एट x इज इक्वल टू x नॉट. बोले तो x नॉट का वैल्यू क्या लिखना है यहाँ पे, 0 लिखना. ओके, next one, what is the next one, f of x comma y, this is a given dy by dx. What is the given dy by dx here, x square plus y comma h भी दिए क्वेश्चन में. what is h value here, 0.05. and we can go to the for the problem. what is the problem here, f of x naught comma y naught. okay, f of x naught comma y naught is equal to, DSO फॉर्म क्या है यहाँ पे, f of x naught comma y naught, it's a f of x y dy by dx, x square plus y, x is equal to x naught and y is equal to y naught. okay, y is equal to y naught, x is equal to x naught. x का वैल्यू क्या समझना है यहाँ पे, x naught, and y का वैल्यू क्या समझना, y naught. then वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ यहाँ पे. okay, any problem here, रहेगा बंदोले, any problem मिला. ओके, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्वेश्चन में दिए यहाँ पे, वहां पे x की जगह में x नॉट का वैल्यू पुट करना, y की जगह में y नॉट का वैल्यू पुट करते जाना. x का वैल्यू क्या है, 0 है. ओके, 0 स्क्वायर क्या बनेगा, 0 बनेगा, प्लस y का वैल्यू क्या है, इट्स अ y बोले तो y नॉट, इट्स अ 1, 0 प्लस 1 बिकम 1. किसका वैल्यू है, f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट. सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू फाइंड हियर, x1 का वैल्यू फाइंड करने का यहाँ पे. x1 वैल्यू कैसे फाइंड करना, ये फॉर्मूला दिए मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में, x नॉट प्लस h, x नॉट का वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस h का वैल्यू क्वेश्चन में दिए 0.05, 0 इज इक्वल 0 प्लस 0.05 बिकम 0.05, इट्स ओनली. ओके, देन फाइनली फाइंड करने के क्या है मॉडिफाइड यूलर्स में, x1. ओके, कैसे लिखना है यहाँ पे, y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू, y ऑफ x1 इज इक्वल टू लिखने के बाद कौन सा वैल्यू आता है यहाँ पे, y1 का, वो वैल्यू है यहाँ पे फाइंड करना. यहाँ पे देखो y ऑफ x1 ऑलरेडी आप फाइंड करे यूजिंग h वैल्यू. व्हाट इज x1 वैल्यू हियर, 0.05 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब कौन सा वैल्यू फाइंड करना हो, y1 का वैल्यू फाइंड करना. ओके, फ्रॉम यूलर्स फॉर्मूला. अब फॉर्मूला तो देखो यूलर्स होने के बाद मॉडिफाइड आता है यहाँ पे. ये भी फॉर्मूला है देखो मेथड में, y1 of 0 is equal to y naught plus h into f of x naught y naught. अब सब्स्टिट्यूट करते जाओ वैल्यू, y1 of 0 is equal to, what is the y naught value here, it's a 1. okay, plus h, what is h value, 0.05 into f of x naught comma y naught. what is f of x naught comma y naught here, it's a 1 only. then make a calculation, 0.05 into 1 become 0.05, 1 plus 0.05 become 1.05. okay, and next one, what is the next one here, a यूलर्स फॉर्मूला का वैल्यू फाइंड हुआ. कौन सा वैल्यू फाइंड हुआ यहाँ पे, y1 of 0. अब आगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को जाना, ईच मेथड में 2 अप्रोक्सीमेशन करो बोले मैंने क्वेश्चन में. ओके, फर्स्ट वन y1 of 1. ओके, y1 of 1 का फॉर्मूला क्या है, y नॉट प्लस h by 2 f of x नॉट कॉमा y नॉट प्लस f of x1 y1 of 0. ओके, नथिंग हियर, नया क्या भी नहीं है, फॉर्मूला यूज करके जो फॉर्मूला देते हो ना वहां पे दिए फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लेके प्रॉब्लम में कौन सा वैल्यू दिया ना वो वैल्यू ऐड करते जाना है यहाँ पे. फर्स्ट वन y नॉट, ये y नॉट का वैल्यू कहाँ है, ऑलरेडी ऊपर है देखो, y नॉट, x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 1, वो वैल्यू यहाँ पे लिखना, y नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस h वैल्यू 0.05,
divided by 2 in the bracket f of x naught comma y naught, f of x naught comma y naught already find करें हम. What is f of x naught comma y naught? It's a 1 plus अब f of x1 comma y1 of 0. ये फॉर्म कैसे लिखना, ये दिए सो है ना यहाँ पे क्वेश्चन में dy by dx एज लाइक सेम लिखना है यहाँ पे. कैसे लिखना, व्हाट इज द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे x1 कॉमा y1 ऑफ 0 क्या बनेगा x1 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे dy by dx दिया क्वेश्चन में. ओके, प्लस y1 ऑफ 0. द नेक्स्ट स्टेप यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर एज इट इज. y0 का वैल्यू क्या रहेगा 1 प्लस 0.052 क्या आएगा 0.025 इन द ब्रैकेट 1 प्लस अब x1 स्क्वायर का वैल्यू पुट करना. x1 का वैल्यू क्या है, ऊपर जाना है. व्हाट इज x1 वैल्यू हियर, फाइंड करें. देखो 0.05, इट्स 0.05 स्क्वायर बनेगा प्लस y1 ऑफ 0, इट्स प्रीवियस वैल्यू किसका, यूलर्स फॉर्मूला का. ये वैल्यू यहाँ पे ऐड करो 1.05. फाइनली व्हाट इज आंसर हियर 1.0513. ओके, ऑल ऑफ यू मस्ट एंड शुड यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर. ये इजी बनेगा आपको. ओके, and we can go to the next slide. Wait, next one, second approximation. प्रीवियस में y1 ऑफ 0 हुआ, उसके पहले कौन सा y1 ऑफ 0 है, यूलर्स का हुआ. सेकंड y1 ऑफ 1 हुआ. अब कौन सा है नेक्स्ट वन, y1 ऑफ 2. फॉर्मूला ऑलरेडी दिए हैं यहाँ पे. व्हाट इज द फॉर्मूला, y0 प्लस h by 2 f of x0 comma y0 plus f of x1 comma y1 of 1 बनेगा. यहाँ पे प्रीवियस में क्या बने थे, y1 of 0 बने थे. एज इट इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ यहाँ पे. व्हाट आर द वैल्यूज आर हियर, सी फर्स्ट व्हाट इज द y0 वैल्यू हियर 1 प्लस h वैल्यू डायरेक्ट में करे देखो मैं 0.05 by 2 बने तो 0.025 बनेगा. ओके, इन द ब्रैकेट f of x0 comma y0. What is the f of x0 comma y0 value here, previous one. Okay, it's a 1 only. Okay, plus f of x1 comma y1 of 1. ये कैसे लिखना है, एज इट इज द डीएसओ फॉर्म, dy by dx फॉर्म में लिखना. dy by dx फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा यहाँ पे x1 स्क्वायर बनेगा. x1 स्क्वायर बोले तो व्हाट इज x1 हियर 0.05 को स्क्वायर करो तो क्या बनेगा 0.05 स्क्वायर होने तो ये फॉर्म आएगा 1.0025 प्लस y1 ऑफ 1 द प्रीवियस वैल्यू. व्हाट इज द y1 ऑफ 1 प्रीवियस वैल्यू 1.0513. ओके, नेक्स्ट गो टू द कैलकुलेशन. व्हाट इज द कैलकुलेशन हियर, मल्टीप्लिकेशन करो फर्स्ट वन, एडिशन करो प्रीवियस ब्रैकेट में. फाइनली आंसर, व्हाट इज द फाइनली आंसर हियर 1.0513. ओके, यहाँ पे f ऑफ x0 कॉमा y0 है. देखो यहाँ पे 1 प्लस अब x1 स्क्वायर का 0.0025 आएगा. 0.0025 प्लस 1 क्या बनेगा 1.0025 बनेगा. ओके, ये किसका वैल्यू हुआ y1 ऑफ 2. ओके, क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हो ओनली वी कैन गो टू द 2 अप्रोक्सीमेशन. देन फाइनली व्हाट वी राइट हियर y ऑफ किसका वैल्यू फाइंड करने का था यहाँ पे फर्स्ट 0.05 का. देन लिखो यहाँ पे y ऑफ 0.05 इज इक्वल टू द फाइनल आंसर. व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर 1.0513. ओके सर, ओके, नेक्स्ट वी कैन गो टू द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज में कौन सा वैल्यू फाइंड करने का है y ऑफ 0.1 का. ओके, 30 हो ना, रेकॉर्ड अगला चलो. Okay, we can go to the second stage. What is second stage here? Now let x naught is equal to 0.05, y naught is equal to 1.0513. ये कैसे लेना वैल्यू, यहाँ पे ऊपर देखो सेकंड स्टेज बोलकर है ना, उसके ऊपर व्हाट इज द वैल्यू, फाइनल वैल्यू y of 0.05 is equal to 1.0513.
you see y of x naught is equal to y naught value, ये इनिशियल वैल्यू है. ओके, यहाँ पे क्या समझना, y is equal to y naught at x is equal to x naught. बोले तो x naught का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे 0.05. यहाँ पे देखो. ओके, एंड व्हाट इज द y naught वैल्यू हियर 1.0513. and go to the as it is the same further. F of xy is equal to x square plus y. ये दिया सो यहाँ पे क्वेश्चन में y dash is equal to it means dy by dx. and f of x naught comma y naught. अब वैल्यू ऐड करते जाओ. व्हाट इज x naught का वैल्यू 0.05. ओके, इट्स अ स्क्वायर. स्क्वायर कैसे बने यहाँ पे, देखो x स्क्वायर प्लस y प्लस y naught. व्हाट इज y naught वैल्यू 1.0513. आप स्क्वायरिंग करो. 0.05 स्क्वायरिंग करने के बाद क्या है 0.0025 आएगा समथिंग प्लस 1.0513. आफ्टर मेकिंग एडिशन यू कैन गो टू द फाइनल आंसर. व्हाट इज द फाइनल आंसर 1.0538. ओके, ये वैल्यू फाइंड, किसका वैल्यू फाइंड हुआ यहाँ पे f of x naught comma y naught. एंड वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन कौन सा वैल्यू फाइंड करना, x1 वैल्यू. व्हाट इज द फॉर्मूला फाइंडिंग फॉर x1 x naught plus h. What is x naught value here 0.05. मैं डायरेक्ट कर देखो. ओके, 0.05 प्लस h वैल्यू क्या था प्रीवियस में 0.05. 0.05 एडिशन करो. व्हाट इज 0.05, क्या बनेगा 0.05, इट्स 0.1 बनेगा. ओके, देन फाइनली व्हाट वी कैन फाइंड हियर y1 का वैल्यू फाइंड करने के कैसे लिखना है यहाँ पे y1 of x1 is equal to y1. बोलते x1 का वैल्यू क्या लिखना 0.1. you can do the question mark here because why you're finding the y1 value. Okay, and now substituting in the Euler's formula. First you can substitute in the Euler's formula and go to the further approximation. Then y1 of 0, it's a formula is there. What is the formula, y1 of 0 y naught plus hf of x naught comma y naught. here directly मैं करे देखो यहाँ पे what is the formula, यहाँ पे क्या बनेगा, एक किसका वैल्यू लिखे मैं फर्स्ट में y naught. what is the y naught value, what is y naught 1.0513. okay, plus the next one h. what is h value 0.05. and next one in the bracket f of x naught comma y naught. what is f of x naught comma y naught value here 1.0538. after making the calculation what do you get answer here 1.104. सब लोग करना देखो कैल्शियम में. ओके, we cannot make direct answer. next one, next from the modified Euler's formula. Euler's formula होने के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, नेक्स्ट वन modified Euler's formula. प्रीवियस वन में y1 of 0 फाइंड करे, अब कौन सा वैल्यू फाइंड करना y1 of 1. ओके, फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है. व्हाट इज द फॉर्मूला y naught plus h by 2. ओके, f of x naught comma y naught plus f of x1 comma y1 of 0. अब वैल्यू ऐड करते जाते देखो मैं फर्स्ट वन एक किसका वैल्यू है y naught का वैल्यू प्लस h का वैल्यू 0.05 by 2. अदर सर ನಮ್ದು ಈ ತೋರಿಸಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಈಗ ಕೈ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ತೋರಿಸೋರಿ ಈಗ ತಗೊಂಡು ಏನ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಇದರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈ ತೋರಿಸು ಕೈ. ओके, नाउ y1 of 1 is equal to एक किसका वैल्यू है यहाँ पे देखो ऊपर. ओके, रनिंग आउट ऑफ द टाइम सर ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ 10 ನಿಮಿಷದ. ओके, ಕೇಳ್ರ फास्ट फर्स्ट वन y naught का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो ऊपर y naught. व्हाट इज द y naught वैल्यू हियर 1.0513. वो वैल्यू लिखो यहाँ पे प्लस h का वैल्यू 0.05 by 2 in the bracket f of x naught comma y naught. f of x naught comma y naught value 1.0538 plus x1 square plus y1 of 0. फॉर्मूला में तो x1 स्क्वायर नहीं है, क्यों लिखा है यहाँ पे x1 स्क्वायर, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. ओके, x1 स्क्वायर प्लस y1 of 0. द नेक्स्ट स्टेप वैल्यू ऐड करते गए देखो. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट वन 1.0513 प्लस
0.052 कैलकुलेशन करने के बाद 0.025 बनेगा। द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट का वैल्यू डायरेक्ट रखे देखो 1.0538 प्लस x1, व्हाट इज x1 वैल्यू 0.1, 0.1 स्क्वायरिंग है देखो, ओके, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, प्लस y1 of 0, y1 of 0 already value find करें previous one, what is the value 1.104 and make a calculation 1.0513 plus 0. Okay, 0.025 in the bracket 0.1 square मत okay, 0.1 square करने के बाद something value आएगा यहाँ पे, okay, then add करने के बाद 1.0638 plus 1.104, then what is the final answer here 1.1055 calcium order pani wala, okay. Next one, second approximation, y1 of 2, same formula, what is the formula, nothing changes, only y1 of 0 इधर y1 of 1 बरते, ओके। यहाँ पे देखो फर्स्ट एक किसका वैल्यू है y0 का, प्लस एक किसका वैल्यू है h/2, h/2 बोलते 0.052 करने के बाद 0.025 आएगा, ओके। देन एक किसका वैल्यू है f of x0, y0, डायरेक्टली करे देखो यहाँ पे 0.1 स्क्वायर करने के बाद 1.0638 आएगा, प्लस एक किसका वैल्यू है प्रीवियस का, प्रीवियस बोले तो y1 of 1 का 1.1055 is equal to, what is the final answer here 1.1055, okay. Then finally what we can write here, thus the required y of 0.1 is equal to 1.1055, okay. This is a final solution, okay. क्या करते जाना है यहाँ पे, फॉर्मूला याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना, ओके। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, सभी वैल्यू क्वेश्चन में देते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रहना, ओके। वी कैन गो टू द सेकंड एग्जांपल, सी व्हाट इज सेकंड एग्जांपल, यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड फाइंड y एट, ये देखो y at x is equal to 0.2 given by, given dy by dx is equal, what is the dy by dx value here 3x plus 1/2 into y with y of 0 is equal to 1, ये इनिशियल वैल्यू देखो, ओके। यहाँ पे y of 0 is equal to 1 बोले तो x नॉट का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, y नॉट का वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा। टेकिंग h का वैल्यू दिया है यहाँ पे, व्हाट इज h वैल्यू 0.1, परफॉर्म 3 इटरेशन एट ईच स्टेप, प्रीवियस एग्जांपल में ओनली 2 स्टेप करे, अब ये प्रॉब्लम में 3 स्टेप करते जाना, 3 इटरेशन, ओके, ईच स्टेप कैसे करे, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर, wait, now we need to find y of 0.2, okay। क्वेश्चन में दिया डायरेक्ट फर्स्ट वन में क्या दिया, क्वेश्चन में यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड फाइंड y एट, तो फाइनली वैल्यू फाइंड करने का, देखो फाइनल वैल्यू y of 0.2 by taking h is equal to 0.1, this implies that the problem has to be done in 2 stages, ये स्टेज लागता कितने स्टेज में, 2 स्टेज में बनेगा। फर्स्ट स्टेज में क्या रहेगा, एज इट इज बाय डाटा x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू देखो क्वेश्चन में y of 0 इज इक्वल टू 1 बोले तो x नॉट का वैल्यू 0 लिखना, y नॉट का वैल्यू 1 लिखना, h का वैल्यू क्या है 0.1, देन f of xy दिए सो क्वेश्चन, ओके, f of xy बोले तो इट्स अ dy by dx 3x plus y by 2, मल्टीप्लिकेशन में रहना कितना, मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/2 into y, it's a y by 2 only, then what we can find here, first one f of x naught comma y naught, f of x naught comma y naught बोले तो कैसे फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, see the question, what is the question here, 3 into x plus y by 2, okay, here 3 is there into x वैल्यू बोले तो x naught का वैल्यू क्या है 0 है, 3 into 0 क्या बनेगा 0 ही बनेगा, प्लस y का वैल्यू क्या है 1 है, 1/2, what is 1/2, it's a 0.5, okay, कॉमा x1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, x नॉट प्लस h का फॉर्मूला, ओके, व्हाट इज x नॉट वैल्यू 0 प्लस h वैल्यू 0.1, 0 plus 0.1 ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.1 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. Then what is the finally value finding here, y of x1 is equal to y1,
ಅಂದ್ರೆ y of x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ फाइंड करना है यहाँ पे देन वी कैन गो टू द सेम फॉर्मूलास फर्स्ट यूलर्स फार्मूला जाना देन बाद में मॉडिफाइड यूलर्स फार्मूला को जाना ओके फर्स्ट फ्रॉम यूलर्स फार्मूला ये फार्मूला याद रखना सब लोग y1 of 0 is equal to y0 plus h into f of x0 comma y0 we obtain okay first y1 of 0 is equal to what is the y1 y0 value 1 plus h what is h value 0.1 into f of x0 comma y0 f of x0 y0 comma find करें यहाँ पे 0.05 after making calculation you can get here 1.05 okay Euler's formula 3 next we can go to the modified Euler's formula and question में mention करे उन्होंने perform 3 iteration each step 3 iteration ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ y1 of 1 y1 of 2 y1 of 3 first we can do one by one y1 of 1 is equal to first you can write the formula y0 plus h by 2 f of x0 y0 plus f of x1 comma y1 of 0 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ next first y0 value 1 plus h value 0.1 by 2 then f of x0 y0 already find करे 0.05 sorry 0.5 plus f of x1 y1 of 0 ई वैल्यू डिपेंड ऑन क्वेश्चन पे ऊपर रहेगा क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने dy by dx के वैल्यू 3x plus y by 2 दिए बोले तो यहाँ पे वैल्यू ऐसा फॉर्म में बनेगा ओके 3x1 plus y1 of 0 by 2 एंड नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ y1 का वैल्यू 1 प्लस ओके 0.1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.05 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ देन नेक्स्ट क्या बनेगा 0.5 प्लस 3 into x1 का वैल्यू ऑलरेडी है व्हाट इज x1 का वैल्यू 0.1 है प्लस y1 ऑफ 0 ऑलरेडी प्रीवियस में करे देखो यहाँ पे y1 ऑफ 0 नेक्स्ट स्टेप में उन्हें सब्स्टिट्यूट करें नेक्स्ट स्टेप में क्या करे देखो नहीं करे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करे हूँ 1 प्लस 0.05 अब मॉडिफिकेशन करो सॉरी यहाँ पे 0.05 प्लस 3 इंटू 0.1 बोले तो 0.3 ओके 0.3 0.5 0.8 plus y1 of 0 by 2 now we can substitute the value y1 of 1 plus 0.05 0.08 plus y1 of 0 this value okay 1.05 divided by 2 then finally make a calculation you can get the answer what is the answer here 1.06625 okay and now second iteration what is second iteration the formula you can formula लिखो आप लोग डायरेक्ट करे देखो y1 of 2 is equal to a y0 का वैल्यू है प्लस h का वैल्यू 0.1 by 2 बोले तो 0.05 बनेगा देन फाइनली a 0.8 कैसे बनेगा यहाँ पे f of x0 y0 मल्टीप्लिकेशन करे तो यहाँ पे 3 into x1 एज इट इज सेम आएगा 0.5 0.3 0.8 बनेगा प्लस a y1 of 1 का वैल्यू व्हाट इज y1 of 1 वैल्यू a previous one okay 1.06625 divided by 2 then final answer here 1.0667 and as it is third iteration okay nothing is there यहाँ पे क्या भी नहीं है only formula फॉर्मूला याद रहना आपको वैल्यू कैसे लेना हो समझ में आना पुट करना कैल्शियम में सॉल्व करते जाना ओके y1 of 3 is equal to 1 plus is 0.05 as it is 0.8 as it is plus previous value what is the previous value ये किसका y1 of 2 का okay y1 of 2 का वैल्यू क्या है 1.0667 by 2 okay what is the answer here 1.0667 okay then finally what we can write here in the first stage y of 01 is equal to 1.0667 बोले तो एक किसका वैल्यू आया यहाँ पे